Hello, my dear students. Very warm welcome to JK Shah Commerce classes. Now I know that everyone was waiting for this video, correct? ये है आपका postmortem of your June 24 paper. I hope सबका पेपर बहुत अच्छा गया है because इंस्टीट्यूट को थैंक्स कहना चाहिए हमें. बहुत इजी पेपर्स निकाले थे एटलीस्ट सीएस एग्जीक्यूटिव लेवल पे. आपका ग्रुप 1 बहुत अच्छा था, स्पेशली जो आज हम डिस्कस करने चाह रहे हैं एसबीआईएल पेपर. ओके, सो लेट्स क्विकली गो टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स. ठीक है ना. अभी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स अगर आप देखेंगे, थोड़ा सा मिनिमाइज कर देते हो आपके लिए. इफ यू सी दिस, आई हैव डिस्ट्रीब्यूटेड एज पर योर पार्ट 1 एंड पार्ट 2. पार्ट 1 विच इज़ फॉर योर 60 मार्क्स एंड पार्ट 2 विच इज़ फॉर योर 40 मार्क्स. सो अगर आप पार्ट 1 देखोगे, सो ऑलमोस्ट सारे चैप्टर्स से उन्होंने कुछ ना कुछ पूछा हुआ है. दे आर सेटिंग अमेजिंग पेपर राइट नाउ बिकॉज ऐसा कोई चैप्टर नहीं है जिसको उन्होंने छोड़ दिया. अगर आप देखोगे तो चैप्टर नंबर 1 जो है, जो कि इतना सा भी इम्पोर्टेंट नहीं होता, फिर भी उसमें से उन्होंने क्वेश्चन पूछा 3 मार्क्स का. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था. विल बी गोइंग थ्रू दैट. दूसरा चैप्टर नंबर 2 6 मार्क्स का. चैप्टर नंबर 3 विच इज़ योर LLP, आई एम सॉरी, इट इज़ फॉर 6 मार्क्स. देन स्टार्टअप आपको इस बार 9 मार्क्स के लिए आया था. आफ्टर दैट चैप्टर 5 जो MSME है, उसमें से भी उन्होंने 6 मार्क्स का पूछ लिया. उसके बाद चैप्टर 6 विच इज़ योर नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज, 6 मार्क्स. 7 is your 6 marks. Okay, to rectify, 6 is your conversion, 7 is your non-corporate. Okay, 8 is your NBFC, उसमें से 3 marks. Then 9 में से 3 marks. 10 which is your setting up of project office and branch office outside India, again 3 marks. 11 chapter which is your setting up of business sites outside India, 6 marks. Then 12 chapter 9 marks. 13 chapter 9 marks. ये जो है ना, ये थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड, एंड एवरीवन नोज दैट इंस्टीट्यूट हमेशा कुछ ना कुछ अनएक्सपेक्टेड करता है. ऑब्वियसली पूरा का पूरा एकदम पेपर सीधा होगा तो मज़ा नहीं आएगा, राइट. सो दिस वाज ऑलवेज एक्सपेक्टेड कि कुछ ना कुछ वो करेगा, एंड इस बार उन्होंने चैप्टर 12 चुना हुआ है इसके लिए. चैप्टर 12 हम डिस्कस करेंगे. उसमें से बहुत ही ऐसा नहीं कह सकते दैट आउट ऑफ सिलेबस था, सब कुछ सिलेबस में ही था, बट ये अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन उन्होंने पूछे थे. दिस इज व्हाट इज ओके बिकॉज दिस इज योर प्रोफेशनल एग्जाम, दिस इज नॉट योर बीकॉम एग्जाम. ठीक है. चैप्टर 13 मैंने आपको बोला था बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो उसमें से चैप्टर 9 मार्क्स 9 आए थे. नाउ अगर आप पूरा पार्ट 1 देखोगे, कोई भी चैप्टर उन्होंने छोड़ा नहीं है. सो ऑल चैप्टर्स आर इम्पॉर्टेंट. सो नाउ आई डोंट थिंक सो आने वाले बैचेस मुझे कुछ भी कभी भी पूछेंगे मैम इम्पॉर्टेंट क्या है. इम्पॉर्टेंट सब कुछ होता है. आई होप एवरीवन हैज अंडरस्टूड टिल नाउ. ठीक है, अभी हम चलते हैं पार्ट 2 में. पार्ट 2 भी देखोगे तो अच्छे से उन्होंने मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन किया हुआ है, राइट फ्रॉम चैप्टर नंबर 14 टू चैप्टर नंबर 20. 14 जो कि लीस्ट इम्पॉर्टेंट है. आई कैन नॉट से एनी चैप्टर इज लीस्ट इम्पॉर्टेंट नाउ, लेकिन जिसमें भर भर के केस लॉज है. ओके, सो दैट इज फॉर 10 मार्क्स. एंड चैप्टर 15 अगेन 5 मार्क्स के लिए पूछा. 16 10 मार्क्स. 17 10 मार्क्स. 18 10 मार्क्स. 19 जो कि मैंने आपको बोला था बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज उसमें टोटल 6 यूनिट्स है ना, तो वो 15 मार्क का पूछा. एंड चैप्टर 20 में से 5 मार्क. सो पार्ट बी में उन्होंने ऐसा कुछ अलग नहीं किया है ना. सो पार्ट बी तो बच्चों को बहुत अच्छा गया होगा. एज एक्सपेक्टेड सारे के सारे सेम क्वेश्चंस आए थे, कुछ फर्क नहीं था उसमें. ठीक है. सो ये था आपका चैप्टर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन. आप इसका क्या कर सकते हो, स्क्रीनशॉट अगर चाहिए तो ले लो. ओके, पूरा एक जगह पे बैठना डिफिकल्ट है. आई होप सबको दिखाई दे रहा है ये. ठीक है. सो ये था आपका पार्ट 1 एंड पार्ट 2. इस तरह से उन्होंने मार्क्स क्या कर दिए, डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं. ओके, चलो. सो अभी शुरुआत करते हैं हमारे पेपर डिस्कशन की. ये है आपका ICSI का पेपर. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट विथ स्टडिंग दिस एंटायर पैराग्राफ. ओके, एंड अभी मुझे नहीं लगता कि किसी भी स्टूडेंट को पैराग्राफ पढ़ने में कोई भी दिक्कत आती है बिकॉज एवरीवन हैज बिकम वेरी एक्सपर्ट नाउ. ओके, सो ANB आर 2 experienced professionals, ठीक है, in information technology industry, and they decided to start their own software development business. They aim to provide innovative software solutions to various businesses while fostering culture of creativity, collaboration. ये आपको थोड़ा सा घुमा रहे हैं. As they embark on their entrepreneurial journey, they encounter various challenges. ठीक है, यहाँ तक
ज़्यादा कुछ रेलेवेंट नहीं था, इतना रेलेवेंट था ए एंड बी जो है दोनों एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स हैं एंड वो कुछ अपना स्टार्टअप करना चाहते हैं, ठीक है। इससे अलावा और कुछ हमारे लिए, हमारे आंसर के लिए कुछ नहीं था। ए एंड बी नीड्स टू डिसाइड ऑन लीगल स्ट्रक्चर, ओके, दे आर कंसिडरिंग फॉर्मिंग एन LLP, ठीक है। वो क्या सोचा है उन्होंने, LLP सोचा है, ओके। LLP क्यों सोचा है, बिकॉज दे वांट टू प्रोटेक्ट देयर पर्सनल असेट, ओके। दे गेट देयर नेम, उन्होंने नाम भी सोच लिया, टेक्निकल सॉल्यूशंस LLP, रिजर्व्ड बाय जुरिस्डिक्शनल ROC। आफ्टर फाइलिंग ए फॉर्म, अच्छा उनका इनकॉर्पोरेशन भी हो गया, फिलिप फाइल कर लिया उन्होंने एंड दे इनकॉर्पोरेटेड योर LLP। नाउ LLP रिक्वायर्स इनिशियल कैपिटल, ऑब्वियसली बहुत सारा पैसा चाहिए, सो इन ऑर्डर टू कवर द स्टार्टअप कॉस्ट, ऑफिस एक्सेट्रा। सो उन्होंने क्या किया, पर्सनल रिसोर्सेज से कुछ पैसा इकट्ठा किया, जैसे कि फ्रेंड्स, फैमिली, इन्वेस्टमेंट, एंजल इन्वेस्टर, क्राउड फंडिंग एंड स्ट्रैटेजिक पार्टनर्स। देन A and B secure necessary startup funds and they gather necessary documents for the GST registration also. So after filing GST application form on the portal and uploading documents, they receive GST registration certificate. काफ़ी easy सा है ये. After that, with growing demand for its technical solutions, अभी उनका demand grow होने लगा, embarked on phase of aggressive expansion. Now they are thinking of aggressive expansion and they want to open new offices in strategic locations and investing in infrastructure and technology upgrades. It introduced innovative solutions leveraging emerging technologies. अगर आप देखोगे स्टूडेंट्स बहुत सारे डिफिकल्ट वर्ड्स डाल दिए हैं, लेकिन पेपर बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं था, है ना। लेकिन क्या होता है ना कि सबसे पहला इतना सब पढ़ के बहुत टेंशन आ जाती है, ये क्या है, सब हमने पढ़ा ही नहीं, लेकिन ये सब आपके लिए रेलेवेंट था ही नहीं, ये सब मैंने आपको क्लास में बताया था, ठीक है। सो इट इंट्रोड्यूस इनोवेटिव सॉल्यूशंस लीवरेजिंग इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, दैट इज योर AI and cloud computing ahead of competition, recognizing need for additional capital. A and B deliberately on possibility, ये हुई ना पते की बात। अभी हमारा इंटरेस्ट ये है ना, लीगैलिटीज, या फिर तुम्हें क्या करना है ना, जब भी तुम पैराग्राफ पढ़ रहे हो तुम्हें चैप्टर्स याद करने हैं कि भाई कौन से चैप्टर से कुछ रिलेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सो कन्वर्जन ऑफ LLP किस में कन्वर्ट कर रहा है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट कर रहा है। नाउ आफ्टर केयरफुल कंसिडरेशन एंड थरो प्रिपरेशन, LLP has initiated process, उन्होंने process भी initiate कर लिया for the conversion, adhering to regulatory requirements. Now, name approval for company has been received. उन्होंने ROC को apply किया था, ROC ने उनको name approval दे दिया. After filing required form along with documents, company technical solution private limited बन भी चुका, incorporate हो चुका, ठीक है। तो ये था आपका पूरा पैराग्राफ। अगर तुम सारी चीज़ें एक साथ लोगे तो सबसे पहले 2 लोग थे, उन्होंने LLP शुरू किया, फिर उन्होंने स्टार्टअप रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होंगे, उसके बाद उनको कन्वर्जन करना था प्राइवेट लिमिटेड में, दैट्स इट। यही था हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। अगर तुम AI, क्लाउड कंप्यूटिंग ये सब में गए तो फिर तुम फंस जाओगे, है ना। तो हम सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, राइट डाउन बेनिफिट्स ऑफ LLP बीइंग कंसिडर्ड बाय A and B व्हाइल डिसाइडिंग द लीगल स्ट्रक्चर। अभी A and B ने LLP का कौन सा बेनिफिट देखा, है ना, कौन सा बेनिफिट देखा, वापस देखते हैं। A and B ने कौन सा बेनिफिट देखा, उन्होंने बेनिफिट देखा एक लीगल स्ट्रक्चर बनाने का, ठीक है। दूसरा, दे वांटेड टू प्रोटेक्ट देयर पर्सनल असेट्स एंड एंजॉय द टैक्स बेनिफिट्स, ये दूसरा है। Okay, so basically when we go to your LLP का चैप्टर, ओके, आपके तो पहला क्वेश्चन आपके कौन से चैप्टर से है, चैप्टर नंबर 3 LLP से है। एंड इफ़ यू गो टू एडवांटेजेस ऑफ LLP, ठीक है ना, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। आपको बेसिकली क्वेश्चन 3 मार्क्स का है, तो आपको उन्होंने पूछा क्या है, दैट A and B ने कौन से फैक्टर्स देखे, कौन से बेनिफिट्स देखे, तो आपको हाईलाइटिंग में कौन सा लिखना है। सबसे पहला एक लीगल स्ट्रक्चर है, ओके। Legal structure, you can write about the perpetual succession. Very important, you have to write about the liability. This was the main important point. उन्होंने क्या सोचा, उनको personal asset बचाना है, that means they wanted an entity which is having limited liability. I hope everyone has understood that this has to be highlighted.
तो आपको लिखना कैसे है, फॉलोइंग आर द बेनिफिट्स considered by A and B while incorporating the LLP. First of all, they have perpetual succession, hence one of the stable form of organization. Second one, you had to write it has a limited liability. So assets in case of insolvency, the liability of the partners remain limited to the percentage contribution, if any. I hope everyone has understood this. Okay, so partners are not responsible for wrongdoings of others. Also, partners do not have to pay debts from their personal asset. This is what was considered. Also, you can write about a startup and also the taxation part. Even taxation part is very, very important over here. Okay, like उन्होंने दो चीज़ें बोली थी, एक तो अपना पर्सनल असेट बचाओ एंड दूसरा टैक्सेशन. तो अगर वो एलएलपी इनकॉर्पोरेट करते हैं, हमें पता है दैट उन्हें डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स भरना नहीं पड़ता, बिकॉज वॉट एवर प्रॉफिट्स आर गिवन टू द पार्टनर्स इट इज़ नॉट अ डिविडेंड. सो डीडीटी अप्लाई नहीं करता. सो ये भी आप लिख सकते हो. और एक लिख सकते हो आप दैट they wanted to register the entity as a startup. Okay, and in the definition of startup 3 entities are there, one of them is an LLP. So अगर मैं सारे points इकट्ठा करूँ, so very first point you had to write about perpetual succession, second one is liability, and third one is a taxation, and fourth one is a startup. I hope ये बहुत simple answer था. और मैंने आपको पहले भी बताया था that जब भी आपको 3 मार्क्स का आंसर आए 4 पॉइंट्स लिखो, 4 मार्क्स का आए तो 5 लिखो, एंड 5 का आए तो 6 लिखो. 1 पॉइंट हमेशा तुम्हारा बफर में होना चाहिए. ज़्यादा लिखोगे तो मार्क्स कट नहीं होंगे, कम लिखोगे तो ज़रूर मार्क्स कट होंगे. आई होप थिंग्स आर अंडरस्टूड वेल, सबको समझ में आ गया. ठीक है, तो ये था आपका पहला क्वेश्चन. अभी हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे जो यही चैप्टर से है. ठीक है, दूसरा भी बड़ा ही सिंपल सा है, हमने पहला डिस्कस कर लिया. नाउ वी आर गोइंग टू द सेकंड क्वेश्चन. डिस्क्राइब द डॉक्यूमेंट्स दैट आर रिक्वायर्ड टू बी अटैच्ड विद प्रिस्क्राइब ई फॉर्म ऑफ फिलिप. सबको पता है फिलिप इज अ इनकॉर्पोरेशन फॉर्म फॉर एलएलपी. ठीक है, सो इसका आंसर कहाँ पे है? अगेन स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है ये. इफ यू सी दिस, दिस आर द डॉक्यूमेंट्स टू बी अटैच्ड टू द फॉर्म फिलिप. ओके, सबसे पहला आपको लगाना है consent of all of your partners including your designated partners, and अगर आपका partner जो है वो body corporate है then a resolution. Subscriber sheet, details of LLP companies in which partner is interested वाला, ID proof, address proof of partners who are individuals, then registered office का address proof, list of main objects of your LLP, NOC. अगर आपका जो रजिस्टर्ड ऑफिस है इट इज़ रेंटेड वन तो आपको एनओसी लेना पड़ता है फ्रॉम द प्रोप्राइटर और द ओनर ऑफ दैट प्रॉपर्टी. सो ऑल ऑफ दिस पॉइंट्स विल कम अंडर द फिलिप. ये भी बहुत ही सिंपल था, तो 6 पॉइंट्स तो स्टूडेंट्स को आसानी से मिल गए. ओके, अभी हम चलते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन पे. हमारा थर्ड क्वेश्चन देखो क्या है. What are the key considerations for technical solution LLP when they are seeking investment from the angel investor? अभी ये सुन के थोड़ी सी हड़बड़ी मची होगी, है ना, ये क्या है? What are the key consideration? ये सब क्या है? See, now over here थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो एंजल इन्वेस्टर का जो शॉर्ट नोट है वो याद आएगा आपको. एंड ये जो क्वेश्चन है वो चैप्टर नंबर 4 से है. कहाँ से है? चैप्टर नंबर 4 से, विच इज अ स्टार्टअप चैप्टर. सो विच आर द की कंसिडरेशन यू हैव टू टेक केयर व्हेन यू आर ऑब्टेनिंग कंसिडरेशन और फाइनेंस फ्रॉम योर एंजल इन्वेस्टर्स. ठीक है, सो हम चलते हैं एंजल इन्वेस्टर्स पे. ये भी एक डायरेक्ट क्वेश्चन था. अगर आपने ठीक से क्वेश्चन आराम से पढ़ा हुआ है सो कोई भी टेंशन नहीं था तुम्हारे पेपर में, बिल्कुल आसान पेपर था. यस, सो दिस इज व्हाट इज एन एंजल इन्वेस्टर. ठीक है, सो एंजल इन्वेस्टर बेसिकली सिर्फ इंडिविजुअल्स होंगे या फिर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स होंगे, इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स होंगे. व्हाट ऑल थिंग्स यू हैव टू टेक केयर? यू हैव टू टेक केयर दैट all of your SEBI AIF regulations 2021, this is an amended version now, so it has been complied with. Okay, so there are certain restrictions which we have to take care. Angel investors जो है they can invest only in the startup. In which startup they can invest?
any startup which is not promoted or sponsored by those industrial group which is having group turnover exceeding 300 crores. ठीक है, या फिर those company where angel investors are funding, they cannot have any kind of a family connection. ये लिखना था. फिर इन्वेस्टमेंट लिमिट आपको लिखना था. मिनिमम इन्वेस्टमेंट चाहिए 25 लाख का, मैक्सिमम 10 crores तक. सो इट कैन नॉट एक्सीड 10 crores. एंड वी हैव टू मेक श्योर दैट लॉक इन पीरियड इज फॉर 1 year. दैट्स इट. एकदम आसान था ये, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था. तो 3 क्वेश्चंस हो गए. लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन नाउ. Now what are the documents to be attached or to be uploaded with the GST application on the GST portal? अभी ये जो है वो क्वेश्चन है आपके चैप्टर नंबर 13 से. अभी ये भी एकदम ही डायरेक्ट क्वेश्चन था जिसका आंसर यहाँ पे है. Okay, so these are the documents required for the GST registration and these are the documents to be uploaded with the GST application. आपको पता है GST application REG 01 में होता है. Okay, so now सबसे पहले पैन कार्ड, then आपके business organization का proof. That means if you are a company, then a COI. If you are a partnership firm, then your registration certificate. Next, you have photographs in case of individuals. Next, ID proof in case of individuals. Then address proof of person who is in charge. मतलब in case of company, whoever is the authorized representative, उसका address proof चाहिए. After that, business address proof, that is आपका company या partnership या LLP का business proof, and not business proof but your registered address ka proof, and last one is your bank account statement. So all of this are the documents required for the GST registration. Again, very simple question. Now next one. Describe the conditions required to be fulfilled for conversion of LLP into a private limited company. आपको पूछा क्या है students? आपको पूछा है conditions. अभी conditions basically conversion जो है, so this question is from chapter number 6. So again this is a direct question which comes over here. These are the conditions to be fulfilled for the conversion from LLP to a private limited company. सबसे पहले तो सारे partners, okay, all the partners should have consented for the conversion from LLP into a company. Secondly, LLP should comply with all the returns and filing compliance. जैसे कि LLP के सारे returns which is mandatory, that is form 8 and form 11, and all of your income tax return has to be up to date. कुछ भी pending नहीं होना चाहिए, because pending होगा your regulator is not going to give you NOC, and without NOC you cannot proceed with the conversion. After that you have to give a publication for conversion. ये procedure का ही part है. If you know, this is conversion of your part 11 companies, correct? So this publication has to be made in the newspaper in format URC2, and this has to be given in 2 newspapers, एक English में and दूसरा vernacular language where registered office of your company is situated. Thirdly, LLP में minimum 2 partners होने चाहिए in order to convert into a private limited company. And very importantly, कोई भी charges against the company open नहीं होने चाहिए. ये सारे provisions हमने class में सीखे थे. If you remember, before we learn any conversion, okay, we go with the कंडीशंस फर्स्ट, है ना. तो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन था. तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1 विच वाज मैंडेटरी एंड विच वाज वेरी वेरी इजी. ओके, सो अभी हम चलते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 2A पे. अगेन बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन से आए. टोटली अंडरस्टैंड, आपको रीड करने में थोड़ा टाइम लगता होगा, लेकिन ऑब्वियसली यू वुड बी वेरी हैप्पी आफ्टर रीडिंग दिस. सो लेट्स रीड दैट क्वेश्चन. Robin Hood Against Hunger is a registered society under Societies Registration Act. Okay, so society सुनने के बाद आपको समझ में आया this may be related. Okay, it's not required, may be related to chapter 7 which is not corporate entities. Being non-profit organization, society possesses tax exemption certificate under section 12. Everyone knows this. Society is also recognized NGO under ATG. Promoters have decided to convert company into a section 8 company. Okay, abhi twist ho gaya, right? So that food items can be delivered free of cost to poor and needy people in state of Madhya Pradesh under mission of koi nahi bhuka soega. Society is also planning to start its own manufacturing unit. Okay, automatic food processing unit will be set up in capital of state at primary level.
being a company secretary suggest benefits available to section 8 company. ठीक है, सो ये है आपका असली क्वेश्चन, बेनिफिट्स ऑफ सेक्शन 8 कंपनी. अगर आपको याद है बेनिफिट्स ऑफ सेक्शन 8 कंपनी आपको चैप्टर नंबर 12 में दिया गया है, करेक्ट. ऑल्सो हाईलाइट दैट देयर is there any additional requirement for license to ensure FSSAI, that is food safety standard. So this is from chapter number 13. I hope everyone understood. So दो अलग अलग है यहाँ पे, so let's go and check it out. सबसे पहला हम advantages देखेंगे. Yes, so this is your chapter number 12 and इसके examples or not example but exemptions. Okay, ये benefits of section 8 company है. Now students, you have to be very clever enough to write this because ये सिर्फ 3 marks का है. कितने marks है? 3 marks. and उसके लिए आप इतने सारे exemptions नहीं लिखोगे, बराबर ना. So now what you'll have to do, you have to compare society and a section 8 company and write the benefits. तो कैसे लिखोगे आप? सबसे पहला you will be writing that section 8 company is a body corporate. Okay, society is not a body corporate. So let's start. The very first one you will be writing, as of now there is no capital requirements. After that you can write that company secretary is not required. After that you can write about the shorter notice, instead of 21 clear days 14 days notice is required. उसके बाद you can write about independent directors, there is no requirement of independent directors. 4 हो गए. After that you can write about dispatch of your financial statements, instead of 21 clear days you need to dispatch only and only 14 days before the meeting. Also you have exemption in convening the first board meeting, but yes, you have to convene minimum 2 board meetings in a year, each in 1/2. These are what the exemptions of section 8 company are benefits. So आपको बहुत सारे exemptions है, उसमें से आप कोई भी 3 या 4 लिख के आ जाओ, more than enough. अभी दूसरा जो आपको पूछा गया है, आपको फसाई के बारे में पूछा गया है. ओके, विल फसाई बी अप्लीकेबल और नॉट. ऐसा नहीं पूछा है कि एडिशनल रिक्वायरमेंट फॉर फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स. सो लेट्स गो टू द फसाई. फसाई तो सबको बहुत अच्छे से आता है, करेक्ट. फसाई तो सबका बाएं हाथ का खेल है. ओके, फसाई कभी चाहिए, कोई भी तरीके का आप फूड बिजनेस करते हो, देन फसाई इज रिक्वायर्ड. ओके, अभी यहाँ पे भी फसाई रिक्वायर्ड होगा, बिकॉज इफ यू सी इनका जो बिजनेस है वो पेटी फूड बिजनेस वेंडर में आएगा. एंड पेटी फूड बिजनेस के डेफिनेशन में मैंने आपको सिखाया था दैट इट इंक्लूड्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड एनी रिलीजियस और सोशल गैदरिंग एक्सेप्ट ऑफ द कैटरर. ओके, सो कोई भी तरीके का फूड बिजनेस कर रहे हो, फ्री में कर रहे हो नहीं कर रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, यू हैव टू ऑब्टेन फसाई. सो इन एडिशन टू सेक्शन 8 कंपनी यू विल हैव टू मेक एन एप्लीकेशन फॉर फसाई रजिस्ट्रेशन. ओके, बिकॉज दे विल कम इनटू विच कैटेगरी? पेटी फूड कैटेगरी. ओके, सो नाउ फॉर दिस मैंने आपको समझाया था दैट फॉर्म नंबर A is required. Can you see this over here? Petty food business operators are required to obtain FSSAI registration by submitting form A. ठीक है, जैसे ही फॉर्म ए सबमिट होता है FSSAI रजिस्ट्रेशन का रिप्लाई मिल जाएगा आपको 7 days में. मतलब या तो एक्सेप्ट हुआ या तो रिजेक्ट हुआ है विद इन 7 days. एंड वी कैन ऑब्टेन FSSAI फॉर एनी नंबर ऑफ ईयर्स फ्रॉम 1 year to 5 years. मैक्सिमम 5 years वी कैन अवेल. इतना ही आपको आंसर लिखना था. आई होप थिंग्स आर क्लियर. ठीक है, और मुझे पूरा भरोसा है मेरे सारे स्टूडेंट्स ने, आई मीन सब लोगों ने इसी तरह से लिखा हुआ है. ये क्वेश्चन बिल्कुल छोड़ने जैसा नहीं था. ठीक है, नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन. PNC लिमिटेड इज अ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी. ठीक है, कौन सा कंपनी है ये? लिमिटेड बाय गारंटी कंपनी है एंड इट इज़ नॉट हैविंग शेयर कैपिटल. ओके, so I have told you one thing, when you are a guarantee company not having share capital you are a section 8 company. तो ये आपको थोड़ा सा घुमा फिरा के पूछा हुआ है. आई होप सारे स्टूडेंट्स को इतना समझ में आया कि सेक्शन 8 कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं. आर्टिकल्स ऑफ कंपनी गिवन बाय एनी पर्सन. ओके, give any person right to participate in divisible profit of the company otherwise than as member. मतलब you are not a member. ओके, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था. सो इनके आर्टिकल्स क्या प्रोवाइड करते हैं?
आर्टिकल्स प्रोवाइड करता है दैट अ नॉन मेंबर हैज राइट टू पार्टिसिपेट इन द डिविजिबल प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी. ओके, मैंने आपको सिखाया था, इफ यू रिमेंबर, पहले तो ये आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, ये क्वेश्चन है फ्रॉम चैप्टर नंबर 2. कहाँ से है ये? सेकेंड चैप्टर से. ठीक है. नाउ एज पर दिस मैंने आपको सिखाया था, एज पर योर सेक्शन 8, it should contain 3 things, then only you are section 8 company. सबसे पहला, you should be engaged in some kind of promotion of art, science, commerce, etc. Second talks about they can earn profit, but they intends to deploy its profit for promoting its object. Okay, and lastly they have said that there is prohibition as to what? Prohibition as to distribution of dividend to its members. Okay, that means कोई भी section 8 company, if you comply with this 3, then only you will get a license over here, otherwise you will not get license from the central government. So basically the section 8 company के provisions कहते हैं you can earn profits but you cannot distribute profit. तो किसी का भी हक नहीं होता, आपको थोड़ा सा twisted question पूछा गया है, किसी का भी हक नहीं होता सेक्शन 8 कंपनी के प्रॉफिट में. ठीक है. सो whatever profits are there, they have to be put in promoting the object. Okay, and can you have any person who is a non-member and उसमें that person will be having a right to profits? How unfair it is, because section 8 company is basically for the donation, not donation exactly, but the social cause. Okay, so section 8 company को काफ़ी सारे donations आते हैं. Okay, so those are the profits of the company or any activity which is done out of that donation. How fair it is to distribute that to any other person. I hope you are understanding certain things. So if you take all the things into consideration, the moral of the story is none of the person should be entitled to divisible profits of the section 8 company or company in our question having guarantee, that is guarantee company not having share capital. So this contention whatever they have given, what is the question? Examine the validity of provisions in articles of association of the company. So provision in articles of association of such company is not valid as it is ultra vires of memorandum of association, and when it is ultra vires not even memorandum but also to the Companies Act 2013, and when anything is beyond the Companies Act, the particular clause is not at all valid, it is void ab initio. आई होप एवरीवन हैज अंडरस्टूड. तो थोड़ा सा घुमा फिरा के ये क्वेश्चन था, लेकिन अगर आपने ये क्वेश्चन 2-3 बार ठीक से पढ़ा होगा तो आपको इसका आंसर अच्छे से आया होगा. आई होप एवरीवन हैज अंडरस्टूड दिस. तो इसमें एक्चुअली आपको लिखना क्या था? यू हैड टू राइट प्रोविजन ऑफ दोज 3 सेक्शन 8 कंपनी. उसके बाद आपको लिखना है दैट आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन शैल बी सबऑर्डिनेट टू कंपनीज एक्ट 2013 एंड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. एज कंपनीज एक्ट स्टेट्स दैट none of the person shall be entitled to divisible profit in section 8 company, and there being a clause in the articles allowing a non-member to be entitled to divisible profit of the company, such clause is contravening Companies Act 2013, hence it is null and void. That's it. I hope आपको समझ में आ गया. Okay. Now going to the next question. A and B are close friends who graduated from renowned college and they want to start OSP company for commercial purpose. अभी OSP देख लिया, मतलब ये तो समझ में आ गया कि ये है चैप्टर नंबर 13 से क्वेश्चन. स्ट्रेट फॉरवर्ड ही होगा ऑब्वियसली. What license and documents are needed to be obtained to operate as an licensed OSP similar to other service provider? So let's go to your चैप्टर नंबर 13 में ही है हम. लास्ट है इफ यू रिमेंबर.
यस, क्वेश्चन क्या है? व्हाट लाइसेंस एंड डॉक्यूमेंट्स आर नीडेड टू बी ऑब्टेन्ड? ओके, दो तरीके के लाइसेंस है, तो उनको ये कहाँ पे शुरू करना है? हरियाणा में। हरियाणा में करना है तो ये डोमेस्टिक है, करेक्ट? सो यू नीड टू एडवाइज देम दैट they need to take domestic OSP because they are going to provide services located in India only, that is national boundaries of India. Okay, over here who is a nodal officer? Nodal officer is Department of Telecommunications. Now what are the documents to be submitted? Form number 1 is there, okay, and then you have to submit online application in the dot portal, and after that following are the documents: COI, memorandum articles, LLP agreement, board resolution or power of attorney, resolution passed by designated partners in case of LLP, nature of business activities, list of present director, list of present designated partner if you are an LLP, present shareholding pattern of company, and present shareholding pattern of an LLP. So once you acquire a license, it will be valid for how many years? 20 years, but it can be extended for further 10 years. इतने information के साथ अपना आंसर हम खत्म करेंगे. I hope things are understood well. ठीक है, ये एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था. अब तक बताओ क्या डिफिकल्टी था? कुछ डिफिकल्टी नहीं है. उसके बाद नेक्स्ट वन, PQR Limited is a listed entity in textile sector. PQR listed entity है. Out of total revenue 40% is generated from export sales. ये थोड़ा सा टाइम पास कर रहा है. Okay, so company sells its item in New York through local distributors. However, as per the agreement, distributors have right to use their own logo and item purchased from PQR. Company is planning to incorporate a subsidiary in city of New York for better branding and direct customer sales. Company is planning to set up a manufacturing unit nearby New York City. As per the law prevailing in USA, what are the requirements for workers compensation and disability insurance? ये है direct question. इतना सही क्वेश्चन है, इसके पहले सब ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सब जगह घुमा दिया है ना. इसलिए मैंने आपको क्लास में बार बार कहा है, रीड क्वेश्चन प्रॉपर्ली. उनको चाहिए क्या? ठीक है, ये बहुत ही आसान है ये, इफ यू रिमेम्बर. अच्छा चलो बताओ, ये कौन से चैप्टर से आता है? सेटिंग अप ऑफ बिजनेस आउटसाइड इंडिया, है ना. ये मोस्ट अनएक्सपेक्टेड पार्ट से क्वेश्चन है, लेकिन मैंने आपको इसके हैंड रिटन नोट्स लिखवाए थे अगर आपको याद है तो. ओके, सो ये यूएसए का है. यूएसए का उन्होंने वर्कर्स कॉम्पेंसेशन पूछा हुआ है, वेरी वेरी अनएक्सपेक्टेड. एंड ये एक नहीं और एक क्वेश्चन उन्होंने पूछा है. सो सेटिंग अप ऑफ बिजनेस आउटसाइड इंडिया में से ये दो क्वेश्चंस उन्होंने पूछा है, एक न्यूयॉर्क एंड सेकेंड वन सिंगापुर. इस तरह से दोनों क्वेश्चंस पूछे हैं. वर्कर्स कॉम्पेंसेशन, यस. सो ये है अरेंज फॉर वर्कर्स कॉम्पेंसेशन एंड डिसेबिलिटी insurance. Okay, so who is the agency for that? New York State Workers Compensation Board. So उनको क्या करना है? आपका जो limited liability corporation है, you have to obtain and maintain workers compensation insurance and disability insurance. मतलब कभी भी employee को कुछ भी लगा, कुछ भी injury हुआ during the employment, they'll be repaid or they'll be reimbursed from this particular insurance. So for that they need to purchase workers compensation insurance policy and disability benefits insurance policy from authorized private insurance carrier or through New York Insurance Fund. After that company has EIN, ये मैंने आपको बताया था, Federal Employer Identification Number. So it's a company's primary identification, ये आपको पहले ही obtain करना होता है. So जब भी आप workers compensation board को apply करेंगे, you have to give communication of this EIN. Okay, so with respect to communication with workers compensation board or by becoming member of group self-insurer authorized by board. So company will give its EIN to insurance carrier when obtaining and maintaining workers compensation. Okay, so now workers compensation is calculated using employees risk classification, salary. इतना डिटेल में आपको जाने का ज़रूरत नहीं था. उसके बाद मैंने आपको बताया था that each covered employer must post and maintain at the conspicuous place. Okay, क्या नोटिस लगाएगा? इनफॉर्म DB 120 में वो क्या नोटिस लगाएगा? दैट हमने क्या लिया हुआ है? वर्कर्स कॉम्पेंसेशन लिया हुआ है. दिस आर द एलिजिबल
employees. Okay, so किसे apply करता है ये? An employer who has employed in New York State one or more employee at least 30 days in a calendar year is a covered employer. Okay. Yes. So 30 days may not be consecutive. I hope everyone has understood so far. So ये एक था direct question. Okay. हो सकता है कि आपने ये attempt ना किया हो. That is perfectly fine. In this professional exam, if you have not covered everything, that is perfectly fine because it 3 marks का ही था. Okay. After that, next one. ABC Financial Services community-based financial institution is exploring a incorporation of Nidhi Company. Now Nidhi Company आया तो Nidhi Company कौन से chapter में है? चलो जल्दी बताओ. ये chapter number 2 से question है. ठीक है. So institution seeks to advise on benefits of incorporating Nidhi Company. So advice. ओके पिछला क्वेश्चन देख के टेंशन आया होगा, यही क्वेश्चन देख के हंसी आ गई होगी, राइट? सो बेनिफिट्स ऑफ निधि कंपनी पूछा गया है. स्ट्रेट अवे विल बी गोइंग टू अवर चैप्टर नंबर 2. स्ट्रेट फॉरवर्ड दिया हुआ है. व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ इनकॉर्पोरेटिंग निधि कंपनी? बेनिफिट्स आपको वैसे चैप्टर नंबर 13 में भी दिया है. सो दिस आर द बेनिफिट्स ऑफ इनकॉर्पोरेटिंग अ निधि कंपनी. अगेन अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन. निधि कंपनी क्या करता है? इट मोबिलाइजेस सेविंग. इसमें आप निधि कंपनी के बिजनेस भी लिख सकते हो. व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ अ निधि कंपनी? ओके, एवरीवन नोज दैट it is for savings, creating habit of thrift among its members. So mobilizes small saving mostly in the middle class and they disburse loan to eligible borrowers. Okay, owing to small size and closeness, disbursement of loan is very speedy as compared to the banks. So this specially useful in case of borrowers who are in urgent needs. उनका urgent requirement meet हो जाता है. दूसरा रीपेमेंट गारंटी होता है बिकॉज यहाँ पे बहुत सारा पीयर प्रेशर होता है. बिकॉज निधि कंपनी में जो भी काम करता है वो सारे क्लोज प्रॉक्सिमिटी वाले होते हैं. जो मेंबर होते हैं वो एक दूसरे को जानते हैं. ओके, सो व्हेन एनी डिफॉल्ट इज डन अदर पर्सन कम्स टू नो एंड उसका सोसाइटी में नाम खराब हो जाता है. सो देयर इज अ पीयर प्रेशर. आफ्टर दैट Nidhi company offers higher rate of interest also as compared to your bank, so it becomes attractive investment opportunity, especially senior citizens. Also, board of directors normally consist of senior citizens who have experience in handling finance and who are respected in the social circles. Okay, so because of that, Nidhi company का credibility हमेशा बना रहता है. So these are the few advantages of incorporating Nidhi company. I hope things are understood well. ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको पूछा गया वो है डिग्री ऑफ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ द एंटरप्रेन्योर डिजायर्स टू हैव ओवर बिजनेस अफेक्ट्स द चॉइस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. इफ़ यू रिमेंबर ये चैप्टर 1 से है ना. एंड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने बताए थे फैक्टर्स में. दिस इज वन ऑफ दोज पॉइंट. करेक्ट. सो लेट्स गो टू द चैप्टर नंबर 1. डिग्री ऑफ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट. Yes. So question क्या है इसमें? In light of above statement, explain how control and management factor is basic factor to choose suitable form of organization. Basically इसको आपको explain करना है. Control and management. See, when you are a professional and you are advising your client that which kind of entity is suitable for you, you have to understand your client requirement. So अगर उसे पूरा कंट्रोल चाहिए, you have to suggest them OPC or a sole proprietor. अगर उन्हें पूरा कंट्रोल नहीं चाहिए, they are ready to share it with some other people. So you can suggest for partnership or LLP. But they don't want any control and their main concern is raising funds, and you can go for the company. So control and management is all about this. So under sole proprietorship, OPC, management and control are completely under one person. Under partnership form, duties and responsibilities are jointly shared on the basis of the agreement. And in company, management and control are vested upon board of directors as their elected representative of a shareholder. So if individual wishes to have direct control, then sole proprietor is preferred. And if ready to share the control, then partnership. If activities are managed by professionals, then your business firm. I hope everyone has understood this. बहुत simple था. Next one.
Group of residents in housing complex in Delhi who have recently taken possession of their homes. ठीक है, इन्होंने possession लिया अपने घरों का from builder. They are not satisfied with poor, that means they are dissatisfied with poor maintenance of complex. They wish to create a legal entity, especially for maintenance of housing complex. What kind of legal entity would be best suited for them? अभी ये थोड़ा सा घुमा फिरा का क्वेश्चन पूछा था, लेकिन ये नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी का क्वेश्चन है, एंड यू कैन फॉर्म अ कोऑपरेटिव, सो दे कैन क्रिएट MSCS. बट बेसिकली अगर आप ध्यान दोगे यहाँ पे ग्रुप ऑफ रेसिडेंट्स ऑफ वन हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस देयर इन दिल्ली, दे कैन नॉट क्रिएट MSCS बिकॉज ओवर हियर when can cooperative society be created? When you have similar kind of interest. But over here the main requirement for MSCS is the individuals have to be from minimum of 2 different states, and 2 different states से minimum 50-50 चाहिए. So यहाँ पे if you see there are a group of residents from Delhi only. Okay, so which is a legal entity best suited for them, and what are the basic requirements for creation of this particular entity, so they can create a cooperative society. Okay, let's go to the next question. Renewable Power Limited is leading renewable energy developer with expertise in solar and wind power generation. RPL has identified Wind Power Private Limited as potential partner to establish equity-based joint venture focused on developing large-scale renewable energy projects in the country. So RPL approaches you to seek your advice on key characteristics of equity-based joint venture. Again, very simple question and direct question. ये है from chapter number 9. Okay, so let's go to chapter number 9. Yes, so if you remember in class I had given you certain points on the equity joint venture and the contractual joint venture, so that is what you had to write. Basically you had to explain that in the equity joint venture it's an arrangement where you have a separate legal entity formed, and it is formed by 2 entities. Okay, so 2 business houses or 2 individuals can form a separate legal entity for a particular purpose. Okay, so they'll become, that is the new entity will become owner of all the resources contributed by the sponsor company. Then they jointly agree on purpose and functions of new entity, and they contribute to the capital in the proportion as agreed, and as per that only they will be sharing the profits and losses. Also in equity joint venture, profits and losses of jointly owned entity are distributed among partners in ratio of capital contribution. Then you can write this key characteristics as it is. Okay, so there is agreement and formation of new entity, sharing of ownership, management, responsibilities, profits and losses. I hope this was so simple. Now let's go to the next one. J&K Brothers and running traditional business for production of snacks and namkeens items under brand of Rajaram. The business organization is in form of private limited and both are holding 50-50. Due to sudden death of J, there is need to convert a private company into OPC. Oh, this is again a conversion. Okay, chapter number 6. As there being no successor of J. Okay, so what types of forms and attachments are required with ROC? MCA for conversion of private to OPC. कितना आसान है बताओ. Chapter number 6. अगर आपको याद है मैंने आपको इसके हैंड रिटन नोट्स भी दिए थे. Private limited company to OPC. Yes. So private limited company to OPC में what all things they have asked you? They have asked you form एंड अटैचमेंट्स दोनों पूछा है आपको. ठीक है, तो अगर आपको अच्छे से हैंड रिटन नोट्स याद है तो आप आसानी से इसे लिख सकते हो. ओके, सबसे पहला INC 6 आपको फाइल करना है. INC 6 के साथ MGT 7, MGT 14 आई एम सॉरी. तो बेसिकली आप पूरा प्रोसीजर ही लिख लो. सो फर्स्ट बोर्ड मीटिंग, बोर्ड रेजोल्यूशन, देन गिव 21 क्लियर डेज का नोटिस, then convene general meeting and pass special resolution, because now you are a private company then getting converted into a OPC. Okay, so once you pass special resolution, file MGT 14 within 30 days. After that, make an application
for conversion, inform INC 6. ठीक है, INC 6 में conversion application देंगे and इसमें कौन से attachments लिखेंगे? List of members and creditors, latest audited balance sheet and P&L, NOC from secured creditors. This is very important document, ये मैंने आपको highlight भी करवाया था. Directors of company giving declaration by affidavit that number of member do not exceed 1. This is very very important. And any other information. That's it. इतना ही लिखना था. Simple था ये. After that, company registered in Japan opened project office for setting up and commissioning of coal-based power plants in India. Due to change in government policy and promotion of solar power projects and other power plants, project is not needed. So nodal officer is instructed by management to close the project office. Simple है, direct question है ना? So BULO PO याद है ना सबको? Chapter number 10 से है. Closure, if you remember, सबसे last provision है ये. Again a straightforward question. Okay, what do you need to do for closure? सबसे पहले you need to make a request for closure, and this request for closure is to close and also to allow the remittance of winding up of proceeds of BULO and PO. It needs to be submitted to whom? Designated category 1 banker. And इसके साथ आपको attachments करने हैं. कौन सा attachment करना है? Copy of Reserve Banks of AD's approval letter. जो BULO PO जो है स्टार्ट करने का जो अप्रूवल लेटर है वो अटैच करो. इसके साथ ऑडिटर सर्टिफिकेट भी अटैच करना है. उसमें 3 चीज़ें इंडिकेट करेंगे वो. सबसे पहला वो इंडिकेट करेगा द मैनर in which remittable amount has been arrived, that is asset and liabilities, confirming that all liabilities in India including gratuity, salary, everything has been paid off, nothing is lying, and thirdly confirming that none of the income is going to accrue from outside India. ये auditor declaration देगा. After that, confirmation from your parent company or applicant that company के खिलाफ या फिर आपके PO जो close होने वाला है उसके खिलाफ कोई भी legal proceedings जारी नहीं है. Report from ROC that they have completed all the compliances as far as Companies Act is concerned. And designated AD category and banker will ensure that they have filed all the respective AAS. And everyone knows what is AAS. Without that, you cannot be closing it. Okay, after that, any other documents. I hope things are understood well. समझ में आ गया? Okay. Now, next one. OTM Financial Services Limited got licensed to operate as payment bank. Payment bank आपका NBFC. Okay, so as per terms of license, where compliance including KYC verification is required to be complied with strictly from time to time, OTM Financial Services made non-compliance and accordingly lot of restrictions and penalties were imposed. Thereafter, RBI approved a scheme by which payment bank may be transferred to public sector. तो आपका जो बैंक है वो किसे ट्रांसफ़र होने वाला है? पब्लिक सेक्टर. लीडिंग PSU in financial sector is interested to acquire business of OTM. Before making offer, management of bank requires checkpoints to be considered as terms and condition for running business of payment bank. You have to prepare a note on that. ये थोड़ा सा twisted question था. So let's go to your payment banks. So this is लिटिल बिट सजेस्टिव काइंड ऑफ अ क्वेश्चन. तो आप इसमें पेमेंट बैंक रिलेटेड जो भी आपके मॉड्यूल में है, जो भी हमारे नोट्स में है, दैट यू कैन राइट. सो बेसिकली यू कैन से दैट पेमेंट बैंक एक ऐसा नया मॉडल है बैंक्स का विच इज़ रेस्ट्रिक्टेड फ्रॉम एक्सेप्टिंग डिपॉजिट बियॉन्ड 2 लाख पर कस्टमर एंड दे पे इंटरेस्ट जस्ट लाइक सेविंग्स बैंक अकाउंट. तो both current account, savings account can be operated by such banks. Then payment bank can issue ATM cards, debit card, net banking. This all can be done. लेकिन 2 चीज़ें वो नहीं कर सकते. लोन नहीं दे सकते एंड क्रेडिट कार्ड इशू नहीं कर सकते. ओके, ये बिजनेस के लिए ये टर्म्स एंड कंडीशंस है, तो ये लिखना ज़रूरी है. आफ्टर दैट, मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द बैंक होना चाहिए टू स्प्रेड पेमेंट एंड फाइनेंशियल सर्विस टू स्मॉल बिजनेस एंड लो इनकम हाउस होल्ड
माइग्रेंट लेबर वर्कर्स एंड सिक्योर टेक्नोलॉजी। तो आप इसमें ये एक पॉइंट डाल सकते हो दैट जहाँ पे भी बैंकिंग सिस्टम नहीं है, रूरल, सेमी रूरल और सेमी अर्बन एरियाज, वहाँ पे आपको ज़्यादा अपना बिजनेस कॉन्सेंट्रेट करना है। So RBI seeks to increase the penetration level of financial services to remote areas of society. So in order to open a bank account, it's very easy as compared to other banks. आपको क्या करना है? You can instantly open account through mobile app by just providing Aadhaar with the KYC verification. So most of the payment bank have non-banking, that is non-NBFC heritage, and they will use word payment bank as a customer retention and acquisition mechanism. ये आपको सिर्फ points लिखने थे. Again very simple it was. Now going to the next. AB Handicrafts is a family owned company based in Jaipur, specializing in manufacturing of exports of handicrafted textiles and home decor. The company has been operating for past 15 years as prominent player. Company seeks professional advice on criteria of classification of MSME. आपको ये क्वेश्चन पढ़ के स्माइल नहीं आए आपके फेस में? इतना आसान है. क्लासिफिकेशन ऑफ MSME डेफिनेशन पूछा है ये लेवल पे ऐसा क्वेश्चन. ये है चैप्टर नंबर 5, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, कुछ नहीं करना है इसमें. ये है आपका क्लासिफिकेशन. ठीक है. So your micro enterprise investment in plant and machinery is not exceeding 1 crore, turnover not exceeding 5 crores. Small enterprise investment in plant and machinery not exceeding 10 crores, turnover not exceeding 50 crores. Medium enterprise investment in plant and machinery not exceeding 50 crores and turnover not exceeding 250 crores. That's it. Okay, after that, XYZ Solutions Private Limited is a newly established technology company based in Bangalore. Company specializes in developing AI-powered software for healthcare as part of its growth trajectory. XYZ Private Limited is exploring benefits available to startup. Advise company about benefits given to entrepreneurs establishing startup. Don't you think ये भी बहुत easy है? ये है चैप्टर नंबर 4 से सीधा सीधा क्वेश्चन. याद है मैंने आपको बताया था इतने सारे बेनिफिट्स है, इसमें से 7-8 याद रख लो. तो यहाँ पे आप 5 लिख के आते हैं तो बहुत हो जाते हैं. ठीक है. दिस आर द बेनिफिट्स. ओके. सबसे पहला इनका रजिस्ट्रेशन काफ़ी सिंपल है, ओनली ऑनलाइन, मोबाइल ऐप और वेबसाइट, and you have to submit documents and it is completely online. दूसरा, they have reduced the cost for the intellectual property rights, especially patent का highlight कर सकते हो 80%. तीसरा, government has created fund of funds of 10,000 crore rupees in order to provide funds to the startups. Then they have given tax holiday for 3 years and section 80 IAC. Then whenever you are submitting tenders to government, 2 things have been relaxed or exempted, that is experience and turnover. 7 new research parks have been set up. There is no time consuming compliances because you have self-certification for 6 labor laws and 3 environmental laws. Okay. After that, tax saving is there for investor, whoever invest in the startup. Also you have tax saving for the startup if startup invest in the government recognized security. So ये सारे benefits आप लिख सकते थे, very easy. Next one, MN Limited is newly incorporated company intends to carry on business of international trade. So company seeks guidance on requirement of IEC. Oh my god, कितना आसान. चैप्टर नंबर 13 से क्या पूछा है पहले देख लो. रिक्वायरमेंट्स ऑफ आईईसी. आईईसी का ज़रूरत क्या है? मैंने बोला था दैट आईईसी देख के या कोई पर्टिकुलर लाइसेंस देख के एक्साइट मत हो जाना, उसमें पूछा क्या है वो जानना ज़रूरी है. यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स नहीं पूछा है, यहाँ पे आपको पूछा है रिक्वायरमेंट्स ऑफ आईईसी. यस, सो दिस इज व्हाट इज़ द रिक्वायरमेंट ऑफ आईईसी. यहाँ से आईईसी जो है वो लाइफ टाइम के लिए वैलिड होता है.
and IEC must be quoted whenever you're clearing the customs as far as your importers are concerned and when you want to send money abroad. Also, IEC are required by exporters when they want to send their shipments and also while receiving money from abroad. IEC is issued by Directorate General of Foreign Trade. Everyone knows that. Main objective of IEC or main objective of DGFT is regulate and promoting the exports. This is what you had to write. Okay. After that, straightforward question, difference between partnership agreement and trust deed. Again, this is a straightforward question. So basically difference between partnership deed and trust deed आपको इस तरह से लिखना है. So divide your page into 3 columns. So first one you will be writing the main topic, then your partnership deed and third one is a trust deed. उसमें पहला point आप लिखोगे regarding who runs that. Okay, so partnership obviously it is run by the partners and over here they are run by the trustees. I'm just giving you the brief idea of difference between the two. Secondly, who all are the partners in the or who are the parties in this? Okay, over here they are who come together to do a business. Okay, so minimum इसमें कितने होने चाहिए 2 and maximum 50. This is what you can write. And over here 3 parties. So यहाँ पे minimum 2 चाहिए लेकिन यहाँ पे minimum you require 3 parties. So what are the 3 parties? We have settler, we have trustee and we have a beneficiary. Okay, after that talking about the term may you can write about partnership can be either limited partnership, that is fixed partnership, or it can be at will. Okay, it can be for fixed purpose also. What about the trust deed? Trust deed may contain when the trust will come to an end. Okay, so obviously the duration will be fixed. After that, contents of trust deed. So trust deed includes all the rights and liabilities of whom? Of that of a partner. And your trust deed contains all rights and liabilities of that of your trustee, where ultimately the interestor is that of a beneficiary. Intention over here. Partners are going to always and always see the financial success and their liability obviously within the assets of the partnership. Now after that, as far as your trust deed is concerned, over here it will be for whose benefit? Benefit of the beneficiaries. So this is how you have to write this answer. I hope everyone understood the difference between the two. Okay, उसके बाद alternatively ये दूसरा question था. So ABC is considering expanding its operation in Singapore due to country's favorable business environment. So company aims to establish a subsidiary in Singapore. Okay, so ABC Limited seeks your advice on process and requirement for incorporating company in Singapore. Very straightforward question. This directly comes from your chapter number 11. इसके मैंने आपको हैंड रिटन नोट्स भी दिए थे अगर आपको याद है तो. So if you want to form company in Singapore, the regulator is ACRA, that is Accounting and Corporate Regulatory Authority. Okay, so this is complete online registration. You have to first make name reservation and there is a portal called as BizFile Plus. Okay, so you have to start the company's incorporation by making name application and this is a fees you have to pay is 15 Singapore dollars. And once you submit this, after that you have to wait for name application reservation. So you will get it in few minutes, but sometimes when you want specific approval of any of the authority, then it may take from 14 days to 2 months. And once name is approved, it will be valid for 120 days. After that, you have to submit your incorporation and incorporation processing fees will be 300 Singapore dollars and it will be done within 15 minutes from your successful submission of all the documents. So once you
are successful in incorporating company, you'll receive a free copy of business profile along with your certificate of incorporation. So this is how you incorporate a company. Also, you can add up a point calling as you have to take registration for GST with IRAS, which is Inland Revenue Authority of Singapore, if your annual taxable turnover exceeds 1 million Singapore dollars. I hope everyone has understood. ये भी काफी simple था. After that, every startup has its unique journey to become unicorn. Minimum and maximum time taken by startup as unicorn are 6 months and 26 months respectively. You have to define the term unicorn and you have to say whether startup are different from the entrepreneurs or not. So now let's write the question. It is from chapter number startup. So chapter number 4. Yeah, so this is what is a short note, how entrepreneurship is different from the startup. Along with that, we have to write first point as a unicorn. So what is the first difference between the two? That entrepreneur refers to all business venture. It can be new or old, correct? So it can be small business, partnership firm, sole proprietor, corporation, any kind. But startup always and always they emerge into new field. It's necessary, okay, and they meet up the market gap. So because they are the disruptors. So they always and always mean new businesses which are going to solve everyone's problem, that is market problem. So this is a basic difference between entrepreneur and a startup. And now you have to write a short note, not short note, but a definition of a unicorn. So again, this is a straightforward one. Remember the phases of startup. In the phases of startup, we have this. Yeah. So this is what is a unicorn startup. So what is unicorn startup? Where the valuation is over $1 billion. Okay. So unicorn basically they start their journey from the growth stage and they are disruptors. They starting unique way to solve anyone's problem. This is it. It was very simple. Okay. After that, ESDP scheme aims at promoting new enterprise capacity building of existing MSMEs and inculcating entrepreneurial culture in the country. So this is from chapter number 5, which is your MSME chapter. Okay, MSME chapter talks about various schemes. उसमें से एक आपको पूछा गया है. Yes, so it is Entrepreneurship and Skill Development Program, ESDP scheme. Okay, basically it aims at what? It aims at promoting new enterprise, capacity building, same thing which has been given, correct? So जो existing entrepreneurs है, okay, so entrepreneurs, it motivates them from different section of society, including SC, ST, women, etc. Ex-servicemen, BPL person as a career option. Okay, so they provide with various skill training in agro-based product, hosiery, food product, जैसे भी business शुरू करना है, that is what is their main target. So ये किसे apply करता है? Existing या सारे के सारे aspiring entrepreneurs को. तो कोई भी एक simple सा चीज़ सीख के आप उसका अपना business शुरू कर सकते हैं. So that is what is the aim of this particular scheme. Now next question they have asked is, what are the factors to be considered by secretarial auditor while segregating applicability of specific law and general law? ये थोड़ा सा unexpected सा question था. This is from your chapter number 12. ठीक है, कहाँ पे है? I'll show you that. So this is the answer. So laws relating to industries, specific laws. So कुछ laws होते हैं जो general होते हैं जो सारे companies को apply करते हैं, लेकिन कुछ laws specific laws होते हैं जो sector specific होता है. जैसे कि आपका company अगर manufacturing में है तो manufacturing laws apply करेंगे, pharmaceutical है तो pharmaceutical law apply करेंगे, also geographical location के basis पे. So कौन से sector है जिससे आप ये laws का segregation कर सकते हो? This is a prima facie duty of a secretarial auditor whenever they are doing secretarial audit. So specific laws and general law segregation is applicable on company into industry specific and general. It's essential for the secretarial audit. So after considering the following factors, auditor should make segregation of same based on laws applicable on the company. Okay, so सबसे पहला key parameter क्या है? पहला key parameter है turnover, paid up, net worth, borrowings, etc. So ये है. After that,
आपका कंपनी का लोकेशन, आपके सारे ब्रांचेस प्लांट्स कहाँ पे है, फिर व्हाट इज़ द स्टेटस ऑफ योर कंपनी वेदर लिस्टेड और अनलिस्टेड, which type of company you are, private, public company, OPC, Section 8 company, etc. Then कौन से अथॉरिटी के साथ आपने रजिस्ट्रेशन लिए हुए हैं, देन कौन से सेगमेंट में हो आप, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग, ई कॉमर्स, इंडस्ट्री क्लासिफिकेशन, then number, class and category of employees, workers, apprentice, women's, etc. So this is what is an answer. ओके सो ये था आपका पार्ट 1. आई होप सबको समझ पे आ गया. बहुत इजी पेपर था. ऐसा हो सकता है कि सारे क्वेश्चंस आपको ना आए. अगर कोई ऐसा है जो 100% पेपर अटेम्प्ट कर रहा है तो ऑब्वियसली रैंक लेके आ रहा है वो, लेकिन there are chances where we may lose upon certain things. That is okay, but if you have written 60 marks makes say 55 marks also, then it is more than enough. उसमें से definitely you can expect 30-35 marks. I hope everyone has understood till now. ठीक है, so अभी हम चलते हैं next part पे, which is your part B. So let's read that case law. XYZ Manufacturing Private Limited is a reputable medium-sized manufacturing company जिसका headquarter दिल्ली में है. They are producing electronic components. Okay, catering various industries like telecommunications, etc. ठीक है, मैंने बोला ये सारी आवाज़ें हमें नहीं सुननी है. With commitment to quality innovation, they have emerged as a trusted supplier in highly competitive electronic market. So company operates from state-of-art manufacturing facilities spanning over 50,000 square feet in Delhi's industrial hub. So facility enables XYZ Manufacturing Private Limited to diverse needs of its clients. इनका workforce जो है skilled dedicated workforce, so they have 500 employees. Now things to be remembered. Workforce includes mix of permanent, contract laborers, everyone is there. Okay, so they foster the professional development etc. Health safety में उन्होंने क्या किया है, they prioritize करते हैं health safety, audits करवाते हैं safety का, then employee welfare. So they have clean restroom, designated break areas, access to clean drinking water, training development. They invest in training, skill development for their employees to upgrade their skills. Then labor relation. They maintain open transparent communication channels. Regular meetings करते हैं. As far as compliance with labor laws are concerned, they are committed to upholding high standard of compliance. Okay, so they adhere to various provisions like Factories Act, Minimum Wages Act, etc. ये सारे आपके laws है. Okay, so that's it. So let's go to the first one. What is duty of inspector with respect to safety of buildings and machinery? Can state government appoint safety officer? ये है आपके chapter number 16 का straightforward question. Safety of buildings में you have to remember about your construction. Okay, so your floors and everything has to be of proper construction. Then it has to be provided access. Then any person to work at height, obviously you have to take care of proper fencing and all. ठीक है, उसके बाद safety officers के बारे में, can they appoint? Yes, you have to appoint safety officer where 1,000 or more workmen are ordinarily employed, or where any of the manufacturing activity involves risk of bodily injury or poisoning or any of the disease or any other hazard. ठीक है, then occupier will appoint the safety officer. I hope everyone has understood this. सबको समझ में आ गया है इतना? Okay. ये था आपका पहला क्वेश्चन. दूसरा, write down duties of XYZ Manufacturing Limited to provide basic and practical training to apprentice. Now apprentice you have in chapter number 19. Okay, तो duties of employer कहा गया है आपको. ये भी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है. ओके, हम अप्रेंटाइज एक्ट पे आ गए. आई जस्ट वांटेड टू शो दैट एवरीथिंग वॉट एवर इज आस्क्ड वी हैव इन आवर बुक. ओके, सो ये है आपके ऑब्लिगेशन. दिस आर द ऑब्लिगेशन ऑफ एम्प्लॉयर. करेक्ट. सबसे पहला,
to provide apprentice with the proper training as per rules and regulations. Their employer अगर वो खुद qualified नहीं है तो उसे qualified person को appoint करना है. उसके बाद provide adequate instructional staff with proper qualification and any other obligation as per the contract. ये 4 चीज़ें ही आपको लिखनी थी. Okay, so this was a duty of employer. Now third, procedure for fixing of minimum wages act. If you remember, ये मैंने आपको handwritten दिया था, and this is again a straightforward question from your chapter number 18 from minimum wages act. Okay, so this is a procedure, straightforward question from minimum wages act 1948. सबसे पहला गवर्नमेंट इज गोइंग टू फॉर्म अ कमिटी जिसे हम एडवाइजरी कमिटी कहते हैं, एंड यहाँ पे आप कॉन्स्टिट्यूशन इसका लिख सकते हो. ओके, सो इट विल बी कंसिस्टिंग ऑफ पीपल नॉमिनेटेड बाय अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट रिप्रेजेंटिंग एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई इन इक्वल. ओके, बट यू विल हैव इंडिपेंडेंट पर्सन नॉट एक्सीडिंग 1/3 इन टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स, एंड उसी में से एक आपका चेयरमैन होगा. सो वंस यू अपॉइंट अ कमिटी, कमिटी इज गोइंग टू सबमिट द रिकमेंडेशन टू द appropriate government, and that will be notified in the official gazette by publishing thereon, and that particular will be draft. Okay, so जो भी recommendation लोगों को देने हैं, they have to give within the period of 2 months. This is notification method. Okay, and then after consideration जो भी proposals आते हैं उसे government and आपका advisory committee takes into account, and they will finalize one thing, and once it is finalized it will be again then notified in the official gazette, but this time for the implementation of the same, if you remember, and that is implemented on expiry of 3 months from date of issue. I hope everyone has understood this. सबको ये याद आ गया. Okay, इसके मैंने आपको handwritten notes दिए थे. After that, next one, write down provisions in respect to contract labor, and उसके penalties पूछी गई है. So this is your chapter number 16. 16 से ये क्वेश्चन है. प्रोविजंस में आप क्या लिखोगे? इफ यू रिमेंबर, you have to write about the scope of contract labor, and after that you have to write about registration of contract labor. Okay, so registration of employer and license for the contract labor. Okay, applicability you can write where 20 or more contract laborers are employed, or whoever employs 20 or more persons as a contract labor, they have to compulsorily either obtain a registration. Registration is applicable for employer, and license is applicable for the contractors. Okay, and then if you don't comply with this provision, you'll be liable for penalties. All of this we have discussed in the class. Now, next one. X was facing a departmental inquiry for allegedly indulging in sexual harassment of a senior woman officer. He contended that as a alleged misconduct took place not at workplace but at the guest house of the company where woman officer was residing, he could not be accused of sexual harassment at workplace. In light of decided case law, examine the validity. Now, this is from chapter number 20. Now, workplace का definition हमने पढ़ा भी था. If you remember, कोई भी ऐसी जगह, including the traveling, which is provided by employer, will be deemed to be the workplace. Okay, so let's go to that. I'll be telling you the case law also for that. Yes, this is a case law. Saurabh Kumar Malik versus Comptroller and Auditor General of India. So there was a departmental inquiry of sexual harassment, similar kind of case. Okay, and they said it could not be accused of sexual harassment because it did not happen at workplace but at official mess. हमारे example में, हमारे case में क्या था? At the guest house of the company. Okay, so yes, so you have to write this. High Court observed that following factors would have bearing on the workplace. Now, what are the factors? Proximity from place of work, क्या connection है? दूसरा, control of management over that particular place. So, as I told you, anything given by management would be a workplace, and such residence has to be an extension of contiguous part of working place. So, conclusion क्या था?
Official mess where employee was alleged to have been harassed definitely falls under the workplace. So हमारे case में भी similar था that that particular workplace will come under, that is particular guest house will come under the workplace. So it amounts to sexual harassment. I hope everyone has understood this. Okay. After that, Shelja, a female employee working in MNC, informed manager of her pregnancy. She sought guidance on maternity leave entitlements and benefits under Maternity Benefit Act. As manager of company, advised Shelja on maternity leave entitlements and benefits. Again, ये chapter number 19 से question है. स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है. इसमें कौन से तरीके के आपको बेनिफिट्स मिल सकते हैं. सबसे पहला यू हैव टू राइट अबाउट द 26 वीक्स वाला पॉइंट एंड 12 वीक्स इन सर्टेन केसेस. देन यू गेट मैटरनिटी बोनस, यू हैव टू रिमेंबर. आफ्टर दैट यू गेट द क्रैचे फैसिलिटी. देन यू हैव नर्सिंग ब्रेक्स. सो ऑल ऑफ दिस यू हैव टू राइट. ओके. आफ्टर दैट, ABC Limited is medium-sized manufacturing company that produce automotive parts. Company has workforce of 150 workers. So ABC basically awards annual bonus. Okay. Upon conducting internal investigation and reviewing the surveillance footage, management discovered evidence of theft. चोरी हुआ था. किसने किया था? Employee ने चोरी हुआ था. Now, citing relevant provision of payment of bonus act, examine eligibility of bonus. इतना सारा रामायण बताया, ultimately direct question पूछा. Eligibility of bonus, again Code of Wages Act में chapter number 18 से ये direct question है. Eligibility of bonus, if you remember, yes. Can you see the disqualifications of bonus? So following employees will not be eligible for bonus. आपको ऐसे लिखना है. Okay, किसी ने, the person has been dismissed from the service due to fraud, riotous or violent behavior, and theft, misappropriation of the asset. Okay, ये तीन लिख के you have to say that as a person has done theft. If that person is dismissed, he becomes ineligible for bonus. Everyone has understood this? Okay. So next one talks about, there was a severe recession and PR Software Solutions, a mid-size IT firm in India, decided to lay off a significant portion of workforce. Among those affected was Y, a project manager who had been in company for over 7 years. Y was given a month's notice before termination. He believes that his termination was unjust and wants to challenge. Okay. Now, there are certain questions. Under Industrial Dispute Act 1947, can Y challenge his termination due to economic recession? He can challenge, but basically it is not invalid kind of termination because 1 month's notice is given. Okay, what is the requirement under Industrial Dispute Act? 1 month's notice is required. He can challenge, there is no problem at all, but he needs to give what? That means the employer has given 1 month's notice, so he has complied with the conditions. So the answer will be yes. Then what is the role of government in such disputes under Industrial Dispute Act? Now, under Industrial Dispute Act, you have various dispute redressal machineries like Industrial Tribunal, National Tribunal. So it is duty of government, basically the object of Industrial Dispute Act comes into picture. So इसमें object क्या है? Object is to settle the dispute as soon as possible and give justice and not to have any kind of unfair trade practices. Then what are the remedies available to Y if his claim is upheld? So when his claim is upheld, what is the option available? Your tribunal or court can direct your company to restore your job, and secondly, if you have actually incurred any kind of a damages, then to pay the damages also. I hope everyone understood. ये थोड़ा सा tricky kind of question था, okay, but I hope everyone has understood. This is how you had to answer. कोई tension नहीं है. Let's go to the next one. Define term EI code. What are the types of matter decided by EI code? एकदम straightforward question है. This is from chapter number 19. So this is your EI code. Okay, so EI code, that is under section 74, provides that state government shall notify an official gazette and constitute EI court in such areas. It shall consist of such number of judges, but person
will be eligible to become judge. He has been or is judicial officer or legal practitioner for 5 years. Okay, now these are the matters. एक होता है disputes, दूसरा होता है claims. Okay, one is dispute and second one is claim. So what kind of disputes are there? EI court has jurisdiction to adjudicate dispute whether person is employee under ESI or not, the rate of wages or contribution, whether person is employer or not, or benefit accrued to any person. Claims क्या हो सकता है? वो जो contribution देना है उसका recovery करना from employer, और failure किया, negligence किया to pay contribution, उस पर action लेना, या फिर claim for recovery of any benefit admissible. I hope everyone has understood. You can add a line over there saying that no civil court has right to decide matter which is under jurisdiction of EI court. उसके बाद गिग वर्कर्स के बारे में पूछा है एंड उसके बेनिफिट्स के बारे में पूछा हुआ है. सो गिग वर्कर्स मतलब ऐसे वर्कर्स जो परमानेंट नहीं होते, जिनका नाम मास्टर रोल में नहीं होता, वो टेम्पररी बेसिस पे होता है या फिर आपके कॉन्ट्रैक्ट लेबर्स होते हैं. अभी इनको नए कोड में बेनिफिट्स क्या दिए हुए हैं? नए कोड में उनको बेनिफिट्स ये दिए हुए हैं, they are entitled to various health benefits, they are entitled to various ESI benefits, they are entitled to various maternity benefits, they are entitled to EPF benefits. So these are the 4 benefits given to the gig workers. Okay, after that, what are provisions with respect to voluntary reference of dispute to the arbitration? Again, a straightforward question. This is from chapter number 17. Yes, so this is voluntary reference of disputes to the arbitration. इसमें आपको arbitration का short note लिखना है जो मैंने आपको क्लास में notes dictate किए थे, if you remember. So अगर आपने dispute कोई भी labor court में नहीं लेके गए तो आप arbitration में लेके जा सकते हो. Okay, and your preceding officer of labor court, tribunal, national tribunal will be your arbitrators. If your number of arbitrators are even in number, then those 2 arbitrators shall appoint an umpire, because number of arbitrators have to be in odd numbers. And what is relevant, what is important for going to arbitration? An arbitration agreement signed between both the parties to dispute. That arbitration agreement will be forwarded to appropriate government and conciliation officer, and receipt of that they have to publish within 1 month in the official gazette. Arbitrator का ड्यूटी क्या है? केस को इन्वेस्टिगेट करे and submit the report of award. Award means output of your arbitration will be given to the appropriate government. Okay, so this was very simple. After that, ये 2 जो लास्ट के क्वेश्चन है वो आपको पूछे गए हैं from chapter number 15. Okay, so एक है social security and second one is, एंड ये जो लास्ट के 2 क्वेश्चंस है वो आपको पूछे गए हैं चैप्टर नंबर 14 से. कहाँ से पूछे हैं? चैप्टर नंबर 14. ओके, एक तो सोशल सिक्योरिटी इज गारंटीड बाय कॉन्स्टिट्यूशन. लेट्स गो टू द चैप्टर नंबर 14 एंड फाइंड आउट द आंसर. यस, सो सोशल सिक्योरिटी, ये सो सोशल सिक्योरिटी में ये सारे प्रोविजंस आपको लिखने हैं. इफ यू रिमेंबर चैप्टर नंबर 19, उसमें जो भी बेनिफिट्स है वो सारा इसमें आएगा. ओके, सो ये एक क्वेश्चन था. एंड द लास्ट क्वेश्चन इज रिलेटिंग टू योर आर्टिकल 43 ऑफ योर कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज टू सिक्योर लिविंग वेज. अगेन दिस इज अ डायरेक्ट क्वेश्चन आस्क्ड. ठीक है, सो दिस वाज ऑल विथ योर SBILL paper. I hope everyone has understood. Okay, so there may be students who have written 100 marks, there may be students who have written 80 marks, 70 marks. अभी रोके कोई फायदा नहीं है. So let's prepare for the next attempt. I am very much sure you all have done very nice in the exams. Okay, so see you all and we'll be meeting in the next video with a new concept. Till then, goodbye.